Hello, students. Today we are going to start our new chapter from our Moments book, and the name of our chapter is The Lost Child, and it is written by Mulk Raj Anand. The Lost Child is one of the famous stories of Mulk Raj Anand. This story shows the working of the child's mind. It shows that a child has great love for his parents. In this story, a child goes to see the village fair in the company of his father and mother. He wants to buy many things from the fair, but they don't buy anything for him. By chance, the child gets separated from his parents. He runs here and there, shouting for his parents. A kind man sees him. He tries to console the child. He takes him to different shops, but the child goes on weeping. Now he has lost interest in everything. He only cries, I want my mother, I want my father. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा जो अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जाता है. He is happy and excited. He wants the sweets and toys displayed there. वहाँ पे बहुत सारी स्वीट्स दिखती है, खिलौने दिखते हैं. वो देख के उसे उसका मन कहता है कि मैं ये खरीद लूँ. लेकिन his parents don't buy them for him. उसके पेरेंट्स उसे कुछ खरीद के नहीं देते हैं. अब इसके बाद एक जो क्वेश्चन है वो समझ लो. Why then does he refuse when someone else offers them to him? जब कोई और इंसान उसे ये सारी चीज़ें खरीद के देता है तब वो बच्चा इनकार करता है. तो यहाँ पे बच्चों ये एक टाइप की ट्विस्ट है कि ये स्टोरी क्या है, क्या होने वाला है इस बच्चे के साथ, और ये सारी चीज़ें उसको जब चाहिए थी तब उसके पेरेंट्स नहीं देते हैं. तब उसके पेरेंट्स मना कहते हैं कि हमें वो नहीं खरीदना है. लेकिन कोई और जब वो सारी चीज़ें उसे खरीद के देने के लिए कहता है तो वो बच्चा ना कहता है, इनकार करता है. सो लेट्स बिगिन दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. Here, hard words are alleys means narrow way, तंग रास्ता, gaily means happily, खुशी से, clad means wearing, पहने हुए, और brimming means filled, जिसका मीनिंग होता है भरा हुआ. It was the spring season. As the winter season had just ended, all the people came out of their houses. They were going brightly dressed to a fair. A little boy and his parents were also among them. वसंत का त्योहार था और तंग गलियों में से लोग बाहर निकल रहे थे. कुछ लोग चल के, तो कुछ लोग हॉर्स पे बैठ के, तो कुछ लोग बैम्बू और बुलोक कार्ट्स में बैठ के मेले में जा रहे थे. एक छोटा बच्चा जो जीवन और हंसी से भरा हुआ था, वो अपने पिता के पाँव के बीच में दौड़ते हुए इस मेले को देखने जा रहा था. वो बच्चा बहुत उत्साहित था. कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. It means
The child was attracted to the toys which were displayed at the various stalls. As he would be left behind, his parents would call him to come with them. Here, the lag behind का मतलब होगा stay behind, पीछे रहना. Fascinated मतलब attracted, आकर्षित होना. Linger means hanging around, टिके रहना. और receding means left behind, पीछे छूट जाना. Come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined their way. इस बच्चे को उसके पेरेंट्स बुलाते हैं कि जल्दी चलो, क्योंकि वो पीछे रह जाता था. उसकी नज़र टॉयज पे थी, जो वहाँ पे शॉप्स थी, वहाँ पे बहुत ढेर सारे टॉयज थे, तो वो टॉयज को देख रहा था. अब जब पेरेंट्स ने उसको आवाज़ दी तो वो उसके जो पाँव है वो आज्ञा मानते हैं पेरेंट्स की, उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ टॉयज को देख रही है. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old, cold stare of refusal in their eyes. I want that toy, he pleaded. Here difficult words are suppress means overpower, dabana, or pleaded means requested, request करना, अनुरोध करना. It means as he reached them, he couldn't control his desire to buy a toy. He was familiar to the reaction that they would give. He knew that they would stare him, indicating Daniel to buy him the toy. The child knew the emotionless way in which they would stare at him. The child was unable to control his desire any longer. He said that he wanted to buy the toy. स्टूडेंट्स, इस बात का हम सबको अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और जब हम वो चीज़ अपने पेरेंट्स को कहते हैं तो वो पेरेंट्स कैसा रिएक्शन करते हैं, दैट यू ऑल नो वेरी वेल. तो वो बच्चे को पता था कि अगर मैं कुछ कहूँगा कि मुझे टॉयज़ चाहिए तो पेरेंट्स तुरंत देने वाले नहीं हैं और वो कौन सा रिएक्शन करेंगे वो भी उसे पता है. लेकिन फिर भी वो अपनी डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपने पेरेंट्स के सामने अपनी बात रख देता है कि आई वॉन्ट दैट टॉय. मतलब वो ही प्लीडेड, यहाँ पे प्लीडेड मतलब क्या, रिक्वेस्ट करके, फोर्सफुली रिक्वेस्ट करके वो उनको कहता है कि मुझे खिलौने खरीदने हैं. आई वॉन्ट टॉय. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड in his familiar tyrant's way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender, and giving him her finger to hold, said, Look, child, what is before you? It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. Here, tyrant means cruel, cruel, or tender means showing kindness, daya dikhana. The father's eyes grew red with anger, but his mother, melted by the free spirit of the day, was tender, and giving him her finger to hold, and said, Look, child, what is before you? The mother became emotional due to the cheerful mood. Lovingly, she gave her finger to the child to hold and guided him to a place. She asked him to see what was in front of him. She said there was a vast field full of bright yellow-colored mustard flowers. They seemed like flowing streams of gold and were widespread. It means जब पिता को ये बात पता चली तो पिता बहुत ही क्रूअली, राइट, हिंसा मतलब हिंसक बन के ऐसे राजा की तरह लाल आंखें दिखाने लगे. और माँ के दिल में दया होती है, राइट. जब हमें हमारी बात मनवानी होती है तो हम पहले पापा को नहीं कहते हैं, पहले मम्मी को कहते हैं. इसी तरह लेकिन यहाँ पे मम्मी ने बच्चे को शांत कर दिया और उसका ध्यान किसी और जगह पे ले जाने के लिए मम्मी कहते हैं
देखो तुम्हारे सामने क्या है, ये सरसों का खेत, और इसमें जो सरसों के फूल है, जो पीले फूल है, वो जैसे सोना पिघल के मतलब सोना पिघला हुआ हो वैसा लग रहा है। और ये कितना कि ये मीलों तक फैला हुआ है, पूरी धरती पे फैला हुआ है। ऐसा कह के वो जो बच्चे के दिमाग में जो टॉयज खरीदने की बात थी, उस बात को बदलने की यहाँ पे उसकी मम्मी कोशिश कर रही है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. Here, bustling means full of activity, हलचल से भरा हुआ। गाउडी मीन्स वेरी ब्राइटली कलर्ड, मतलब बहुत ही घना कलर, मतलब रंग होना। इंटरसेप्टिंग मीन्स टू स्टॉप एंड कैच समथिंग, मतलब रुक के किसी चीज को पकड़ना। इट मीन्स एक ड्रैगन फ्लाइज का समूह जो अपने बैंगनी रंग के पंख को हिला के एक काली मधुमक्खी या तितली को फूलों के पास जाने से, मतलब ये जो मधुमक्खी होती है वो फूलों की मधुरता के पास फूलों से रस निकालती है, तो वो उसके पास जाने से उसे रोक रहे थे। वो मधुमक्खी को फूलों के पास जाने नहीं दे रहे थे। The child followed them in the air with his gaze, till one of them would steal its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. Here, hard words are fluttering, moving. Fadfadana. Flap means to wave something, especially wings, मतलब पंखों को फड़फड़ाना। The child looked at them as they flew around. When one of them sat somewhere, he tried to catch them, but the tiny creatures would fly away the next every time. बच्चा इस छोटे इंसेक्ट्स का पीछा करता है, और वो जो इंसेक्ट है वो जब तक उसकी विंग्स को शांत करके आराम करने के लिए किसी फूल पे नहीं बैठता है, तब तक वो उसका पीछा करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने जाता है तो हर बार वो जो इंसेक्ट है वो उड़ जाता है, वो उसके हाथ नहीं आता है। Then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come. Come on to the footpath." He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Here, hard words are cautionary means warning, मतलब सावधान करना। अब्रिस्ट मीन्स साइड बाय साइड एंड फेसिंग द सेम वे मीन्स बराबरी में। टीमिंग मीन्स प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स, मतलब बहुत सारी संख्या में उपस्थित होना। द मदर कॉल्ड आउट टू हिम एज दे स्टार्टेड वॉकिंग डाउन द फुटपाथ। द चाइल्ड ran towards his parents. He walked next to them, but after few steps, he stopped to see the insects who were coming out of the soil. जब बच्चे की मम्मी ने फिर से आवाज़ लगाई तो वो उनके साथ चलने लगा, लेकिन जब वो फुटपाथ पे चल रहा था तो वहाँ पे बहुत सारी संख्या में कीड़े बाहर निकले हुए थे, और वो कीड़े अपनी हाइडिंग प्लेस से, मतलब जिस जगह पे वो छुपे हुए होते हैं वहाँ से बाहर निकल के वो सनशाइन ले रहे थे, वो सूर्य की धूप ले रहे थे। इस प्रकार बच्चे के माता पिता आगे चल रहे हैं और बच्चा अभी भी वो कीड़ों को देख रहा है। Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove,
and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. Here, grow means garden, or petal means any of the usually brightly colored parts that together form most of a flower. मतलब पंखुड़ी, right? Petals means पंखुड़ी. As the child entered the garden area, he was welcomed by a shower of flowers. He forgot his parents and started collecting the petals that had fallen. मतलब कि जैसे ही वो बच्चा है वो पेरेंट्स के बुलाने पे जो गार्डन है वहाँ पे जो एज पे उसके पेरेंट्स बैठे हैं वेल वेल के एज पे बैठे हैं तो वहाँ पे वहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ पे वो नहीं जाता है लेकिन वो क्या करता है वो जो बहुत सारे फ्लावर्स पड़े हैं उसके जो पेटल्स है उसकी जो पंखुड़ी है वो कलेक्ट करना शुरू कर देता है. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. It means, just then he heard the cooing of doves and was excited to see them. He started chasing the birds, and in this way, he forgets that he has petals in his hand. Here, the word low means to draw attention. अब जब ये डव्स की आवाज़ सुनता है तब वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है लेकिन वो शाउट करता हुआ डव के पीछे दौड़ने लगता है. अब वो जब डव के पीछे दौड़ता है तो उसे भूल जाता है कि उसके हाथ में पेटल्स है और ये पेटल्स बारिश की तरह उसके हाथों से गिर जाते हैं. Come child come, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. Capers means a short jump dance or dancing movement. The parents called the child who was running and playing around a banyan tree. They lifted him and walked down a narrow lane through which they crossed the mustard fields and reached the fair. पेरेंट्स बच्चे को बुलाते हैं और वो बच्चा है वो बनियान ट्री के चारों ओर नाच रहा था भाग रहा था और उससे पहले तो वो उठाते हैं और फुटपाथ पे लेके आते हैं और जहाँ से सरसों के खेत के मध्य से मेला लगता था वहाँ पे पहुँचते हैं. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. Here repelled means driven away, मतलब धक्का देना. जैसे ही बच्चा गांव के नज़दीक पहुंचा उसने बहुत सारे फुटपाथ्स देखे और बहुत सारे लोग देखे और वो उसे लग रहा था कि वो एक सेंटर में है. As they were about to reach the fair, the child saw huge crowds of people walking from all directions towards the fair. मीन्स बहुत सारी भीड़ थी वहाँ पे और बच्चा ये सोच रहा था बच्चा वो जो भीड़ को देख के बहुत ही अट्रैक्ट हो गया था. उसके माइंड में मतलब ऐसा लग रहा था कि ये कौन सी दुनिया है, वो अलग दुनिया जैसा फील करने लगा होगा. इस तरह से वो बच्चा बहुत ही वो मेले से आकर्षित हो गया था. वो जिस दुनिया में प्रवेश कर रहा था उस दुनिया की उलझन से वो आकर्षित हो गया था. A sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child started open eyed, and his mouth watered for the barfi that was
his favorite sweet. I want the burfi, he slowly murmured. At the entrance of the fair, to one corner, a sweetmeat seller had set up a shop. He was selling various sweets like gulab jamun, rasgulla, barfi, and jalebi. The sweets were displayed at different heights and were covered with foils of gold and silver. The boy's mouth watered when he sighted his favorite burfi. He expressed his desire to get one in a low voice because he knew that his request would not be fulfilled by his parents. प्रवेश द्वार के कोने पे एक मिठाई बेचने वाला था जो भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बेच रहा था, जिनमें गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी ये सारी चीज़ें थी और ये बहुत ही अच्छे से उसने वास्तुकला के समान उसने उसको डेकोरेट करके रखा था और उसमें बहुत सारे सोना चांदी के अर्क लगाए हुए थे और उसे अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। और वो बच्चा जब बर्फ़ी देखता है तो वो बर्फ़ी उसकी मनपसंद होती है, लेकिन उसे पता है कि उसके पेरेंट्स उसको नहीं ले देने वाले हैं, इसलिए वो धीरे से कहता है आई वॉन्ट बर्फ़ी। स्लोली मर्मर्ड मीन्स धीरे से बोलना, धीरे से गुनगुनाना। बट ही half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. Here, heeded means paid attention, मतलब ध्यान देना, और hawk means to sell goods, चीज़ें बेचना। बच्चा जानता था कि उसके पेरेंट्स उसकी ये रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे, वो ये आधी बात जानता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और आगे चला। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड मतलब फ्लावर बेचने वाला जोर जोर से चिल्ला रहा है, गुलमोहर गार्लैंड, गुलमोहर गार्लैंड। द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland, but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So, without waiting for an answer, he moved on. Irresistibly means greatly attracted. The next stall was of a flower seller. The child wanted to buy a garland. He announced again in low voice because he knew that parents would refuse to buy him the flowers as they would say that they were cheap. So at this time also the boy is not asking anything to his parents, but he moved on. He walks ahead. चाइल्ड गुलमोहर की माला लेना चाहता था, उसे खरीदनी थी, लेकिन वो जानता था कि अगर पेरेंट्स को कहा तो पेरेंट्स ना कहेंगे और कहेंगे कि वो तो बहुत सस्ता है, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहता है और वो आगे बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. Overwhelming means excessive, मतलब बहुत ही अत्यधिक। The next thing that the child came across was a balloon seller selling balloons of different colors of the rainbow. The boy was attracted to the shiny colors of the balloons and wanted to have them all. जब बच्चा बलून्स को देखता है तो वो सारे बलून्स खरीदना चाहता है और उसकी डिज़ायर, उसकी जो इच्छा है वो अधिक हो जाती है। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to buy with such toys. So he walked on farther. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled
itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. Here, hard word is rippling, means a small wave on the surface of water. जब सर्फ वाटर पे कुछ गिरता है, कुछ पत्थर हम डालते हैं और तरंगे निकलते हैं, वैसा. Then he posed at a snake charmer who was playing a flute, and the snake was twisting its neck to the music. The snake had collected itself in a basket and had raised its head out. It bent and moved its neck gracefully like a swan. It seemed that the music of the flute was heard by the snake's invisible ears and created the effect of a waterfall on it, because it swayed its neck in a similar way. फिर वो एक स्नेक चार्मर के पास खड़ा हो जाता है और वहाँ पे ये जो स्नेक चार्मर है वो स्नेक के सामने बांसुरी बजाता है. स्नेक का आधा जो बॉडी है वो कॉइल शेप में, राउंड शेप में बास्केट के अंदर है और उसका हेड बाहर है, और ऐसा लग रहा है कि जो स्नेक के इनविजिबल ईयर्स हैं वो ये सुन रहे हैं, वो ये फ्लूट की जो आवाज़ है, जो धुन है, वो सुन रहे हैं. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. There was a roundabout in full swing. The boy went towards the snake charmer, but as his parents had warned him to remain away from the unpleasant music played by such men, he walked further. There was a roundabout in full swing. अब जो बच्चा है वो स्नेक चार्मर के पास पहुंचता है, मगर वो जानता है कि पेरेंट्स ने स्नेक चार्मर जो फ्लूट बजाता है वैसा आवाज़ सुनने के लिए मना कहा है, इसलिए वो आगे चला जाता है. आगे राउंड अबाउट होता है, मतलब कि जो मैरी गो राउंड होता है वो होता है. मैन, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. Here, whirling means circling, goal. Shriek means cry. Dizzy means confused, and intently means attentively. It means the merry-go-round was full of men, women, and children who were enjoying the ride. The boy watched the people on the roundabout and then, with a lot of courage, expressed his desire to go on the roundabout. Merry-go-round में man, women and children, right, वो सब गोल गोल मोशन में घूम रहे थे. वो सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, और वो सब कंफ्यूज्ड थे, और वो सब हंस रहे थे. ये देख के बच्चे को तीव्र इच्छा होती है कि उसको भी मैरी गो राउंड में बैठना है, और वो एक बहुत ही करेजियस रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स को कि आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट. प्लीज फादर, प्लीज मदर. देयर वॉज नो रिप्लाई. He turned to look at his parents. They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. When his parents did not reply, he turned towards them. He saw that they were nowhere around. He looked around and behind, but his parents were nowhere to be seen. जब बच्चा परमिशन लेने के लिए देखता है तो कहीं से रिप्लाई नहीं आता है, तो वह इधर उधर देखता है, लेकिन उसको उसके पेरेंट्स की कोई मौजूदगी वहाँ पे नहीं मिलती है. उसके पीछे उसके पेरेंट्स
नहीं होते हैं. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Here, fierce means angry, and convulsed means trembled with fear. The boy cried loudly, jogged his body, and ran here and there, calling out for his parents. जो बच्चा है जब उसने रिक्वेस्ट की और उसके पेरेंट्स ने को नहीं पाया तो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगा. उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे. वो डरने लगा. वो पूरी तरह से रोने लगा. उसका गला जो सूखा हुआ था उसे एक अचानक से झटका लग गया. उसके बॉडी को एक झटका लग गया और वो सही में डर के रोने लगा. वो मदर फादर कह रहा है और फिर क्या हो रहा है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं और वो बहुत ही डरा हुआ है. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions. Knowing not where to go, mother, father, he wailed. Here, wailed means mournful cry. Panic stricken means घबरा कर वो पहले एक तरफ भागा, फिर दूसरी तरफ भागने लगा, सभी दिशाओं में भागने लगा और अपने मम्मी पापा को ढूंढने लगा. और वो बहुत ही दुख से रोने लगा और मम्मी पापा कहने लगा. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. As he wailed and ran around, his turban opened and his clothes became muddy. After some time, he gave up. The loud cries turned into mild sobs. Sob means dukh mein rona. At little distances, on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother. Among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. He saw some people standing and talking and tried to find if his parents were among them. The laughter and talks of the people were meaningless for the child. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, father, congested means filled with, भरा हुआ, और shrine means holy place. The boy ran towards a temple which was crowded with people. He ran through the legs of men, calling out for his parents. जो टेम्पल था वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी और वो लोगों के पाँव के बीच में से निकल के अपने मम्मी और पापा को रोते हुए पुकार रहा है. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, Father, Mother.
Here, jostle means to push. Murderous means extremely unpleasant. Hefty means heavy. Brutal means cruel. And trample means crush. The crowd was pushing each other as he neared the entrance of the temple. The boy got scared of huge strong men who stared people with their murderous eyes and pushed them with their strong and big shoulders. The boy could have been crushed under the feet of the man had his cries not been heard by a man in the crowd. A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. How did you get your child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. Here stooping means bending with difficulty, मतलब बहुत डिफिकल्टी से झुकना, और स्टीयर्ड मीन्स केम आउट, बाहर निकलना। एक आदमी झुकते हुए क्राउड में से बाहर निकलता है और ये रोते हुए बच्चे की आवाज़ सुनता है और वो उसे अपने हाथों से उठा लेता है। यह आदमी भीड़ से बाहर निकल के बच्चे को क्वेश्चन पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हारे पेरेंट्स कौन है। द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. Soothe means console, दिलासा देना। बच्चा पहले से ज़्यादा जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। ये शख्स फिर से उसे उसी रास्ते से ले जा रहा है। तो पहले वहाँ पे क्या आता है, मैरी गो राउंड, और मैरी गो राउंड के पास जाके उस बच्चे को कहता है कि क्या तुम्हें घोड़े पे बैठना है, मैं तुम्हें घोड़े पे बिठा के गोल गोल घुमाऊंगा, राइट। लेकिन बच्चा उस पे ध्यान नहीं देता है। The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute on the swaying cobra. Here, tore means to pull and swaying means swinging. बच्चे के गले से 1,000 सोप्स निकलते हैं, मतलब 1,000 सिसकियाँ निकलती होती है। बच्चा अभी भी यही बात के लिए शाउट कर रहा है कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। लेकिन जो मैन है वो उसे उसी रास्ते पे, मतलब जहाँ से वो पहले गुजर चुका है उसी रास्ते से वो आगे बढ़ता है और उसे फिर से स्नेक चार्मर दिखता है। स्नेक चार्मर है वो अभी भी फ्लूट बजा रहा है और उसकी फ्लूट सुन के जो सांप है, जो कोबरा है, वो हिल रहा है। Listen to that nice music, child, he pleaded, but the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. Quieten means to become calmer or less noisy. Persuasively means making ready. वो जो आदमी है वो उस बच्चे को स्नेक चार्मर की फ्लूट सुनाता है, लेकिन ये म्यूज़िक बच्चे को अच्छा नहीं लगता है और वो अपने कान बंद कर लेता है। और इस बार वो बहुत ही ज़ोर से, मतलब डबल पिच से कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। फिर जो आदमी है वो उसे बलून वाले के पास ले जाता है और बलून वाले के पास ले जाके कहता है कि तुम्हें कौन सा बलून चाहिए। वो समझता है कि अगर मैं इस बच्चे को बलून दूंगा
खरीद के एक बलून ले दूंगा तो ये बच्चा है वो शांत हो जाएगा। The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers? Child, would you like a garland to put round your neck? Bore means carried. बच्चा गुब्बारे को नहीं देखता है और एक ही बात की डिमांड रखता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वो आदमी अभी भी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश करता है। वो उस बच्चे को गेट के पास लेके जाता है और वहाँ पे वो फ्लावर सेलर को दिखाता है और कहता है, देखो यहाँ पे नाइस स्मेल वाले, मतलब बहुत ही खुशबूदार फ्लावर है, क्या मैं एक गार्लैंड तुम्हारे गले में डाल दूँ? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. Disconsolate means very sad. The child refused to smell the flowers that he wanted to buy earlier because now his priority was to get his parents. Finally, the man took him to the sweetmeat seller and offered to buy sweets for him. बच्चे को अब जो फ्लावर्स की महक है वो भी अच्छी नहीं लग रही है, उसे सिर्फ उसके मम्मी और उसके पापा चाहिए। अब लास्ट में वो जो मैन है, वो जो आदमी है, वो उसे स्वीट मीट के पास ले जाता है, स्वीट सेलर के पास ले जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें कौन सी स्वीट खानी है, तुम्हें कौन सी स्वीट पसंद है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली sobbed, I want my mother, I want my father. Still the child did not want his favorite sweet but wanted his parents. मतलब वो उसे कोई स्वीट नहीं चाहिए, वो रोते हुए कहता है, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो इस तरह इस बच्चे के साथ ये घटना दो तरह से देखी जाएगी कि पहले जो उसे चीज़ चाहिए थी, राइट, तब उसके पास उसके पेरेंट्स थे, राइट, और जब पेरेंट्स नहीं थे तो उसे दुनिया की कोई चीज़ पसंद नहीं आई, उसे कुछ नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ एक ही चाहिए था, उसके पेरेंट्स, राइट, उसे उसके मम्मी चाहिए थे, उसको उसके पापा चाहिए थे। Here we have come to an end of this story. Stay home, stay safe. Thank you very much.